What makes Indian football so unique? 2 years ago, we set out to find the answer to this question. And we found ourselves on the adventure of a lifetime. One that would take us deep into the heart and soul of our football culture. Where do our players really come from? What stories lie buried in our football heritage? क्या ये भी सर आपका ही मदद है। Where are we breaking through? And where are we falling behind? Most importantly, how big can we dare to dream? These questions led us across the country. I am the wizard, my ancestry gods. The people bound to wake up as inflation involves. They still hailing in bombs, families torn apart. They will get what they want. The people don't get the point of it all and no one revolves. Social credit reports, there is no end of divorce. Only crystals the quartz, so if you picking the course, be sure to pick up with source. Picture the noise, picking this blinking the flickering board. Uncovering hidden gems in unexpected places. This is our journey. This is our story. This is Indian football like you've never seen before. And once you do, you'll fall in love with it. I'm your host Pranay Singh. And welcome to Traveler's Guide to Indian Football. It's 2024. Our journey starts here, in Kolkata, the city of joy. Home to the three most successful football institutions of our country. This is the Mecca of Indian football. हाँ सच है, सिटी ऑफ जॉय फुटबॉल। फुटबॉल के बिना सिटी जो है पूरा नहीं होता है। एक रसगुल्ला, दूसरा फुटबॉल। Ultimately, you've got to believe that, the maximum number of influence in Indian football has come from West Bengal. So much so that their local federation is called the Indian Football Association. So that tells you how much clout they have always had. अगर इंडियन फुटबॉल को समझना है, मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी एक कोलकाता डर्बी आके देख लीजिए। जिंदगी में फुटबॉल छोड़ के आप कुछ नहीं समझे। This is the kind of rivalry that is just raw. It is in your face. आपके ओपोनेंट लोग गोल मारते हैं, वो जो फीलिंग होता है ना, वो आपको एक्सपीरियंस मिल जाए। लाइक उस साइड से शेर की दहाड़ आती है नीचे, वो ना आपके इधर पूरा साइलेंट। Every football player will tell you that no matter who you play for, you have to play for a Calcutta club. Just to understand what it means to be part of that absolute madness. If they want peace, they want joy, they want to express their anger, they want to express their frustration, they want to get lost. Football, their club. Dunked up and down him, delivers the ball, header! Clayton! What a strike, Clayton Silva! Forward, cross love, cross for goal! Their time has come!
So Mohun Bagan has always had this reputation of being this, snobbish. We are the original Bengalis. These others are immigrants. They are the poorer ones. They don't know how to conduct themselves. We are the aristocrats. We are the ones the British left behind. And East Bengal has always had that thing against them that, we'll show them their place. We have fought for everything that we have. We haven't had it easy at all our lives. And Mohammedan Sporting represents a completely different, bank of fans and individuals. A lot of it, of course, is religion affiliated. But then you've also had great players playing for Mohammedan Sporting. So you've got fans of that club purely on the basis of individual players that they've looked up to. जब भी आप मोहल्ले में जाओगे, हर गली में जाओगे, फुटबॉल आपको मिलेगा ही मिलेगा. हर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, सब. डेविड मार बेटा, कैसी मार. फुटबॉल एंजॉय करता है, फुटबॉल देखता है, फुटबॉल खेलता है. ब्लड में फुटबॉल है. बंगाल है, ये फुटबॉल खेल सकता है. ऐसा कल्चर हमारा एक ब्लड में रहता है. If you play in Calcutta, that means you are a footballer. You feel like you are a star. Calcutta teams are always strong and they always demand only victory. Anything else is a failure. It is very ludicrous. I think it is very ludicrous matter of laughter. I don't take it in this way. People say that, oh, the football is a rubbish standard, what is this, it's all very emotional, but it's real. You cannot copy, imitate, fabricate. It is what it is. It's a very real fandom. So if you had to make a career out of the game, if you want to make it big in the game in India, you had to find a way to get to Calcutta. You had to find a way to get to Mohun Bagan, East Bengal, Mohammedan Sporting. If not those three, you go to the other local Calcutta clubs and then find a way to gain the attention of the big three. The Calcutta Football League played across the Maidan, where there are tents of each leagues. There are Tollygunge, George Telegraph, multiple clubs that have been existing for a century or more. That was the center of Indian football for the longest time. So whether you were a VP Satyan or an IM Vijayan playing in Kerala, whether you were a Baichung Bhutia playing in Sikkim or in Delhi, whether you were a Majid Kakru playing in Kashmir, if you want to get noticed on the national stage, Calcutta. Calcutta welcomed its footballers like they were their own. स्टेडियम से हमारा घर एक घंटा लगेगा. 1 घंटा और आप 1 घंटा मतलब इसमें जाते हो सबके साथ? इसमें हाँ. 1 घंटा दूर से हम ट्रेन से आ रहा है मेट्रो करके. आपको समझ में नहीं आएगा, हम 200 किलोमीटर दूर से आए हैं. आज सुबह निकले हैं, कल सुबह पहुंचेंगे. अभी तो 2 मैच और बचे, उसके लिए भी ऐसे ही हर दिन आते हैं हम लोग. In Calcutta, every home there is a football supporter. Either it's Mohammedan Sporting, East Bengal or Mohun Bagan. So that is what makes it a beautiful culture. They know your name. Even if you get in the taxi wala knows your name. यहाँ का तो मशहूर फुटबॉल ही है. आज मोहन बगान का मैच है, वो बहुत अच्छा टीम है. ISL में अच्छा खेल रहा है. क्या लगता है शील्ड जीतेगा? हाँ, जीतेगा? वही जीतेगा. Often called the national club of India by its own fans. दिल में मोहन बगान. The legacy of 130 years. By born Mohun Bagan. It's injected me to love Mohun Bagan. Mohun Bagan has stood for sporting excellence for over a century of our history. The great story of 1911, of the great victory over the Yorkshire Regiment playing with bare feet. That's just a fantastic story. And when they beat them, it was huge news. It went across racial divides and ethnic divides. And it was a huge successful story. Mohun Bagan Club is an institution. Mohun Bagan Club is not an ordinary other club. बंगाल का गर्व है, देश का गर्व है. With wins on and off the pitch, from Selim Manna, Chunni Goswami to Subhashish Bose today,
At Mohun Bagan, being good isn't enough. Excellence is the only currency. मैं बचपन से बड़ा हुआ तो मेरे घर पास में ही खड़ी तो जब मैं निकलता था घर से तो मैं देखता था बाहर मोहन बागान का फ्लैग लगा हुआ है अभी मैच हुआ तो मोहन बागान चल रहा है A supporter is much bigger than any other portfolio. इसी को देख के प्यार है फुटबॉल के लिए इसी को देख के प्यार है मोहन बागान के लिए born Mohun Bagan fan. My father was Mohun Bagan. My grandfather was Mohun Bagan. उसके पहले का पता नहीं मुझे. I saw a football match in Aizawl where Mohun Bagan was coming and they said, we want 2,000 seats. So he said, 2,000 people are going to come from Calcutta to Aizawl to see the match. Everything is at a heightened sort of level of engagement and passion. People also has got a very high regards about Mohun Bagan. The players, the officials, the coaches, 135 years we are running now. 1889 our club has been established. There are so many stars in Mohun Bagan club play. Soilen Manna, Umapati Kumar, Chuni Goswami, Jardal Singh. Thereafter Subroto Bhattacharya. After that Subroto Bhattacharya, Manoj Bhattacharya, Brijesh Bose. Our age is concerned, from there we are supporting you. Chuni Goswami was like Uttam Kumar of football, like or Amitabh Bachchan of football. Any age group till Chuni Goswami. So Chuni Goswami was like that. Essentially, I was a game maker and a midfield player, giving a shape to the team all the time. Maybe I'm on the mold of Platini and Maradona. They didn't score enough, but they did score. I got a lot of goals from my Mohun Bagan team and the Indian team, because I don't know how many I scored. I played with barefooted football, I played with boots on. So I know if I want to take a good shot, barefooted football technique is entirely different from the booted football. People here think Soilen Manna, Chuni Goswami, Subroto Bhattacharya as their own player because they have never changed to any club. We have numbered the trophy and how many times we have won the trophy. And we have taken one each of the trophies. In foreign players, I will say it is Chima and Barreto. Barreto because Barreto played only for Mohun Bagan and he has not played for any other club. पुराना में सबसे अच्छा है बैरेटो के ऊपर कोई नहीं है सब प्रोफेशनल है लेकिन उसके बाद जो कमिटमेंट था बैरेटो हमारा जान है Fan following, crowd pulling comes from this ownership. Whether it is a Kakru who came in the late 80s and was celebrated so much that he often didn't have to pay for a cup of tea for years on. He didn't have to pay for food because they just loved him. They were Mohun Bagan fans, they took care of you. So I interviewed this football fan called Bapi Maji who lives in North Calcutta in a neighborhood called Paikpara. He runs a tea shop. He's an absolutely Kattar Mohun Bagan fan. He's been like that. His wife is, he is, his daughter. They've sold parts of the flat they lived in to be able to have enough money to travel to watch Mohun Bagan play. और बॉस को क्या बोला? बॉस को मेल कर दिया सर को भी सच्ची बताया कि आज खेला है तो सर बोल दिया ठीक है सर भी तो नहीं है यहाँ आसपास कहीं पे नहीं सबसे पहले मोहन बागान उसके बाद सब बिलीव इट और नॉट भाई मंडे है Our supporters are the 12th man. The supporters have to play their own game at the ground to rejuvenate the players, to fight and to come back. That's a remarkable save. Lansum Babayarate. They've got pyros, bro.
Bagan! 3 cheers for Mohun Bagan! আরো একবার তোমার নামে হৃদয় কাঁপে মসজিদেতে মন্দিরেতে গর্জে উঠে In 1920, the flames of protest gave birth to an institution of Indian football, a home for a displaced community, a symbol of hope and resilience. Right foot again. That goes in. It's a 5-star performance here. A stage for talent irrespective of race, religion, or origin. To their supporters, players, and officials, East Bengal is a part of who they are. জয় ইস্ট বেঙ্গল। ফার্স্ট কথা আমরা মানে মুখে বলে কোনো ডেফিনেশন দিতে পারবো না, কারণ এটা আমাদের কাছে একটা আবেগ। जो हार्ट के अंदर होता है, दिल पे होता है, तो वही है ईस्ट बंगाल क्लब। আমাদের রক্ত হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল। From my childhood, I am the blind supporter of this club. ইস্ট বেঙ্গল আমাদের জীবন। ফেভারিট ডার্বি হচ্ছে গিয়ে 1997 ফেড কাপ ডার্বি, বাইচুং ভুটিয়ার হ্যাট্রিক 4-1, আর আমার ফেভারিট প্লেয়ার বাইচুং ভুটিয়া। If you talk to an East Bengal fan, especially from the late 90s, he will talk to you like Bhutia's kid. धीरे धीरे ना वो फैमिली लाइक हो गया था। पोल्टूदा घर में जाता था, दोपहर को लंच करता था। मछली में ज़्यादा इंटेलिजेंसी है, हर टाइम पोल्टूदा सजेस्ट करता था जो उसको ज़्यादा मछली खिलाओ। I didn't exactly know the kind of passion and thing the fan following. I knew it's a big club. But once I started playing there, then I realized that the fans are, and it's just not fans, but it's their legacy. हमारे टाइम पे तरुण बोस, विश्वजीत दास, मैं था थर्ड बोल दिया। सोचा नहीं मेरे को चांस मिलेगा। जिस दिन चांस मिला उस दिन मेरे को प्रूव किया। मनोरंजन बढ़ता है, जिस चांस दिखा दिए क्या स्टॉप है। हमारा नाम होने से किसानों का नाम होता है, किसानों का नाम होने से मेरा नाम होता है। हम दोनों 15 साल खेला तो एक ही टीम में खेला। एक्चुअली जो उसका गेम नहीं देखा ना, जो खेला देखे नहीं, वो मैंने बहुत कुछ लॉस किया हो। क्या बोलता है इंडियन मैराडोना स्किलफुल प्लेयर और किसान जी है, सबसे अच्छा प्लेयर है। सब आदमी एक साथ में काम करता है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं है अकेला कोई डिसीजन लेता है। We are like a family. We are run the show like a family. Diego Maurizio takes it. Borja. Mahesh. It's very special. Look, it's not here in Kolkata also. Last 12 years, there was no trophy, nothing. But the fans were there in Odisha. We feel like home there. ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব লড়তে শেখায়, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব জিততে শেখায়, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব বাঁচতে শেখায়। Saul Crespo ahead at the hour mark. It has a stunning quality. Oh, Clayton has won it and he scored it. हमारा साथ जो उस टाइम था वही बोल सकता है ये कैसा फीलिंग है। He's here to reclaim old lost silver. The way they receive here in the airport and thousands of fans, it's crazy. From airport to club जो हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो মানে এত আনন্দিত ছিলাম, পুরো কলকাতা দেখেছে এয়ারপোর্টে যে ইস্ট বেঙ্গল মানে কি, ইস্ট বেঙ্গলের প্রতি সবার ভালোবাসাটা কি। Being a part of last 2012 Federation Cup and after that winning again for them, I have to give best for this club and this color, and that's what I have tried. Whatever positions we hold or whatever, that is temporary. First and foremost, we are supporters of the club. আমি খুব বাজেভাবে শারীরিকভাবে
অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তখন আমি লাস্ট ইয়ার পারফরমেন্স করতে পারিনি। আপ টু টিল সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া পর্যন্ত যেভাবে সমর্থকরা আমার পাশে থেকেছে, সেটা আমি সত্যিই অভিভূত। আমি ভাবতে পারিনি এতটা সাপোর্ট পাবো। খুব ভেরি রিসেন্ট আমি মা হয়েছি, তাকে আমি সুপার কাপ দেখানোর জন্য আমি ভুবনেশ্বর পর্যন্ত নিয়ে গেছিলাম। তার মানে আমাকে বুঝতে হবে আমি ক্লাবটাকে এতটাই ভালোবাসি যে আমি ছোট্ট সন্তানটাকে আমি আমার ওন রিক্সে আমি খেলাতে নিয়ে গেছি। সেজন্য আমি আমার মেয়েটাকেও যেমন ভালোবাসি, আমি ক্লাব ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবটাকেও ঠিক তেমনই ভালোবাসি। I have lots of like seniors talk with them who play for East Bengal before when I was very young. I think when I work for that, I am going to play for this club one day for sure. I want to give everything for this club because this club give me chance in ISL, and because of the chance I got here, I go to national team also. লম্বা তো বক্সের মধ্যে অপেক্ষায় बॉल पेचन सुलोचना এবং গোল। अगर हम लोगों के पास 1 करोड़ रुपया और एक ट्रॉफी ईस्ट बंगाल क्लब के लिए, तो हम लोग पहले ईस्ट बंगाल क्लब के लिए ट्रॉफी পেয়েছেন। ইস্ট বেঙ্গল 200 বছর হারুক, বাট ইস্ট বেঙ্গল আমার এখানে থাকবে। এবং এই ক্লাবটাকে আমি আমার মায়ের মন্দিরে দেখি। নমস্কার। यही मेरा मंदिर है, यही मेरा मस्जिद है, यही मेरा चर्च है। सब आदमी एक ही चीज सोचता है, ये क्लब मेरा मदर है, क्लब को नर्स करो, सेवा करो, आगे बढ़ाओ, क्लब का फ्लैग को ऊपर लेके जाओ। The epic of Mohun Bagan and East Bengal is known by many in India. But there's another protagonist in this story, one that deserves to be celebrated, not forgotten. Mohammedan Sporting Club, the original innovators, the serial winners. Serial trophy winning club of India. So in the 30s, they were the club. The best players wanted to play for them. They were one of the first teams to figure out the importance of wearing a boot. The club that gave India its first footballing export. From 1891 to today. मोहम्मदन का जो कल्चर है कि एंटरटेनमेंट चाहिए। And who better to speak to than the man whose celebrations still decorate the trophy gallery, still loved by supporters in 2025. An Indian football legend, Shabbir Ali. अरे शब्बीर, तुम बोला नहीं, तुम्हारा वाइफ आया था। तुम रिपोर्टर है, तुम फाइंड आउट करो, हम लोग का ही को बोलेगा। और मैं क्या वाइफ आया बोल के हम जीता। कलकत्ता में दे वांट दिस थिंग ओनली, इफ यू स्कोर ए गोल दे विल आस्क सुबह में क्या किया था, वो क्या किया था, क्या करा क्या। दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। Shabbir Ali is a very fascinating character. So the other day he shared on Facebook one picture from the 1982 Nehru Cup. What's instantly noticeable is that he's not a very tall man, but he has risen so high above. The first name which comes to mind when I see that is Sunil Chhetri, because Chhetri also has this amazing ability to hang in the air, get up for balls which are much higher than what you would expect a man of his height to get up to. So he had this rock star aura about him, and he came in and he took Kolkata football by storm. I think he probably started in the late 1970s and he carried up pretty much till the late 1980s. ये फेडरेशन कप है 1983. This is the first Federation Cup we won in Kannur, beating Mohun Bagan. And ये पेयरलेस ट्रॉफी, तो इस टाइम पे भी
शायद मेरे ख्याल से 11 इयर्स के बाद मोहन बगान को हम लोग जीते, जब कोई भी नहीं सोचा था। हाफ ऑफ आवर टीम जो थी इंडिया टीम के साथ गई थी, और ये टूर्नामेंट और एक स्पेशल है, ये टूर्नामेंट के बाद मेरे को फिर इंडिया टीम में कॉल करे। He was that guy who stood up for the players, who listened to the players, who cared for the players a lot. Like everybody who you speak to about Shabir Ali, who's been trained by him, says great things about him, like how he was a player's coach. And another one of those people who you text and he'll say, call me now. Yeah, I'm forever ready to give interviews or share his insights or experience. So another legend, another down-to-earth legend that we have. Even when we won the league, that was after so many. My photo, they just garland and bring in the car, old vintage car and all. In Calcutta, especially East Bengal, Mohun Bagan, what happened? If you go on winning, people will come to see. Whereas Mohammedan, most of the time, if you lose also, they come to see. इंडिया में कहीं भी खेलेगा मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब तो उधर उसका सपोर्टर है। अब हम सही तरह से हमारा सपोर्टर को हम ग्राउंड में लाएगा ना, फुल हो जाएगा। हम लोग हैदराबाद खेलने गया, केरला खेलने गया, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी खेलने गया, वहाँ भी मॉडर्न सपोर्टर ट्रैवल भी करता है, वहाँ पे लोकल भी मॉडर्न सपोर्टर बहुत है। हम लोग के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है, 12 मैन का काम करता है वो लोग। रक्का मुर्शिदाबाद से आया है, सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ा। We are here all because of our crazy fans. मैं लास्ट 22 ईयर से मॉडर्न स्पोर्टिंग को फॉलो कर रहा हूँ। हम 7 साल के उम्र से मॉडर्न को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। माहिदुल इस्लाम को खेला देखा है, मानस भट्टाचार्य को खेला देखा है, होसुन बेनर्जी को देखा है खेला। अच्छा लोग को भी छोटा से साथ लेके आता है खेला देखा। अब्दुल मतीन, जान मोहम्मदन। जब से मेरे फादर देखे हैं, हमको ले गए हैं, वो तो बहुत पहले का बताते थे, जब वो गैलरी गिरा था मॉडर्न में, वो शब्बीर अली जब खेलते थे तब का था। तो हम लोग जब खेला देखने स्टार्ट किए तो उस वक्त दीपेंदु विश्वास और रहीम दबी स्टार थे। मोहम्मदन बुरा पोजीशन में था, तब तक हम लोग खेला देखते रहे। In other states it's not like that. Here people want to win. People support so much the team, and if something wrong, they are so angry after the match. अरे जल्दी मार नहीं यार, खाली मत उधर, हाथ करके मांग डाल वाले। One of the biggest key role played by Andre was taking that decision on time that proceed with Indian boys more. The kind of talent we had, especially in CFL, we have seen. Andre wanted to keep all of them. I think one of the miracle guy was David and our goalkeeper. What a save that! What a J3! Brilliant job done by these two, especially. You can be a good coach, but if you don't have energy, good energy from the player, you cannot do something. They told me, coach, we want to be on the top and I want to help them. And there it is, the celebrations have begun. They never thought that this will happen to Mohammedan too soon. We had a project in mind that 3 to 4 years we'll win it. Stick to a plan that same coach, same playing style, same strategy. एज ए सपोर्टर तो मेरे लिए ये रमज़ान मंथ चल रहा है, लेकिन ईद से पहले ही हम लोग को ईद का खुशी मिल रहा है। A lot of people are like 50-year-old, 60-year-old, 70-year-old, right? Then we realize that, the struggle for them is for generations. It's a first national cup for Mohammedan Sporting Club. All of a sudden we realize कि हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, दूसरे की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। पूरी टीम में साइन है। क्या बात है, की होगी। I wish I can steal this. ये मुझे दे दो। मेरा जान लेना मगर For all these 3 clubs, they have got the fans. You don't know what is the number. You don't know how much is the passion. You cannot say these fans were more than this, these fans were more than this. And that automatically brings about rivalry, right?
So you think you're the best. Each of these three think they're the best. Each of the three want to have players who are the best. Till the late 90s, till the early 2000s, when Goan clubs, when JCT in Punjab came through, Goan clubs in Dempo Sporting came through, these three were the only clubs you could go to. So naturally, whether it's attracting player attention, whether it's attracting fans, the competition was intense. The rivalry that exists between East Bengal and Mohun Bagan cannot be explained in like words. It's a feeling. It's a huge thing. This ain't the kind of party where I swear I'm gonna play nice. Easily, I think the number one rivalry in the world. The lion off the leash, I'm a little on the wild side. हमारा टाइप तो इस बंगाल मोहम्मद बड़ा मैच है, इस बंगाल मोहम्मदन बड़ा मैच है. Troublemaker got a wicked reputation. I'm as gentle as a hurricane. Oh my. अभी तो देखा नहीं कुछ. टेंट से मैच में हार जाते थे ना, बाहर नहीं निकल जाते. Read it in the papers, everybody says I'm bad news. ईट पत्थर थूथू सब जगह स्पीड कर देता है मुख पे. पुलिस लोग उन लोग को लेके बाहर छोड़ कर अभी मैच हारता है, हाथ से चला रहा है. Derby is matter of ego, is matter of prestige. बहुत से सपोर्टर ऐसा है दाढ़ी बढ़ा लेते जैसा कोई मर गया हो. आप पर हाथ रखता है, बोले ये नेक्स्ट टाइम होगा तो ये आपका ऊपर पड़ जाएगा. You know, Manchester City, Manchester United, you talk about the Milan derby, you talk about derbies in Turkey where things get quite violent. I can tell you that happens in East Bengal, Mohun Bagan as well. East Bengal ये तो हम लोग का पार्ट एंड पार्सल है, चढ़ते सूरज की पूजा है. आप अच्छा खेलो सब आएंगे. दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. Well, I'm sorry, I'm not sorry, but I'm always speaking my mind. और ईस्ट बंगाल को और भी हम लोग चैलेंज कर रहा है. उन लोग जितना भी बढ़िया टीम करेगा, हम लोग के साथ जितना भी मुकाबला होगा, उतना बार ही उन लोग को हराएंगे. যতবার ডার্বি ততবার হারবি. মোহন বাগানের ঘরে বেগে আনোয়ার আলীকে দিয়েছি আমরা. ইসুদা জিন্দাবাদ. 17th derby हम लोग without losing 1932 days हम लोग अनबिटन था. কিন্তু মোহনবাগান আইএসএল পরপর 3 বছর আইএসএল চ্যাম্পিয়ন, লিগ শিল্ড লাস্ট ইয়ার চ্যাম্পিয়ন. তো মোহনবাগানের সাকসেস রেট ইজ মাচ হায়ার. গত 4 বছরে ডার্বি আমরাই প্র্যাকটিক্যালি সব জিতেছি, ওরা দুটো জিতেছে. ये मैच कोई जीरो था, वो एक दिन में हीरो हो सकता है. उस टाइम भी हम लोग टाइम में 80,000 1 लाख सपोर्टर आता है. जब जितना सपोर्टर आता है हम लोग का खेलने में बहुत मजा आता है. Hilsa is a freshwater fish which a lot of the people in East Bengal used to eat. And prawns was on this side. The days when East Bengal Mohun Bagan play, if Mohun Bagan won, the price of prawns used to shoot up. Because everybody used to go and eat prawns as celebration. Going into economics and it's going into society to that level. That is that rivalry that they had. When fans used to get annoyed, they used to throw eggs at the referee if he gave wrong calls. Eggs, like, are not boiled. आतंक तो होगा ही बाबू. बड़ा बड़ा मैच है वाला. जीत गया, ये घुघरी का थाला भी गायब हो जाएगा. These derbies create noise, get media attention, get right kind of audience coming in the stadium who are really loyal fans, and they talk about on social media and everywhere, right? And they got bragging rights. And what else you need? बंगाली जो होता है हम लोग का ड्रीम है कि मोहम्मद इस बंगाल में खेले. प्लेयर करियर में हम कभी खेला नहीं, लेकिन वो जब कोचिंग शुरू किया मेरे मन में ऐसा था कि हम कोच बनेगा ही. यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब में जब हम 2 साल था, एक इंटरव्यू में हम बोला विद इन 5 years आई विल बी इन बिग क्लब. ये जो है ना वो जो मिथ हम उसको तोड़ने वाला है जब हम कोचिंग शुरू किया. Let's go. One thing you see with Sanjay Sen is that he coached all through the ranks. So he's one of those coaches who I think has won every single trophy on offer. As a coach, as an assistant. I played for Mohammedan Sporting for one season where 2014 we played IFA Shield. That is the first time I have seen the people, they come to supporting Mohammedan Sporting. I scored the goal in the finals. And we won the final. When I won, I pressed people telling me, Sanjada, do you know that Mohammedan won this tournament after 44 years? I was really astonished. I told PK Banerjee was coach, Subhash Bhomik was coach, Alok Mukherjee was coach, Sabir Ali was coach, Biswajit Bhattacharya was coach.
I had never seen those much of people for the Mohammedan Sporting Club. It was 31st May 2015. One final time in the Hero I-League 2014-15. It's Bengaluru FC against McDowell Mohan Bagan. The last day decider. Mohan Bagan just needed a draw, Bangalore needed a win. Called with his teammates. This time it was After 13 years. And for me, उसके पहले हमने 6 साल हम लोग को ट्रॉफी नहीं मिला था. सारे ईस्ट बंगाल फैंस हमें चिढ़ाते थे, हम लोग का ट्रॉफी नहीं है, टीम नहीं है, पैसा नहीं है. as well. It's Hutchinson with a cross. Outstanding header. And there's the opening goal as well. BFC scored first. Obviously, it looked like it was an uphill task. There was a lot riding on that match because it looked like Bangalore was going to go away with the league. This ain't war. Perhaps release the ball. That's a good pass. It's a chance. And the equalizer almost came through. But who you hyping? The torch is lit, so keep on fighting. Strike like lightning. हम लोग एक गोल से पीछे थे. Someone slips. Sony goes for a shot, but straight at Ralte. And last moment में सोनी नोडी का कॉर्नर, बेलोरोसा का हेडर. भाई वो चीज़ मैं कभी भूलूंगा नहीं. And the roof absolutely went off the place. Sanjay Sen deserves a lot of credit. Coming to Bangalore and winning at that time was not an easy task. Winning their maiden I-League title, Mohan Bagan became the first club of Kolkata to bring back the trophy to the city, as they brought the National League as well. And the emotions of the supporters knew no bounds. It was Mohan Bagan, the new I-League champions. ভারতবর্ষে থেকে মোহনবাগান সাপোর্টাররা এসছে এবং তারা জিতিয়ে এনেছে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে জিতিয়েছি They had an open top bus ride, which doesn't happen often in Indian football, you know, that level of craze. Fans gathered in large numbers. The crowd was so strong that the local police had to intervene and divert the traffic to keep things under control. They are coming in front of the bus, they are riding their bikes and all. रास्ते में सो गए, वो crying like anything. So that again tells you that how much it meant for not just Mohan Bagan, but just for, you know, football in Calcutta and football in Bengal. मैं सच बताऊं तो अगर कभी मोहन बागान इसके बाद AFC कप भी जीत जाए ना, तो मेरे लिए स्टिल वो दिन सबसे ज़्यादा ग्लोरियस है. 6 साल विदाउट ट्रॉफी एंड देन 13 साल बाद I-League जीतना, कोलकाता में लाना. That was incredible. The next year, I was suspended for 5 matches. Ground में घुस रहा था. I was not entitled to enter the room and all, you know, when you are suspended. But I was going by the car, was entering. People were walking and all, wearing my mask. अब मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा ना, मैं सीट के अंदर में छुप गया है, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो वो तो उधर ही हमको सर कोच. ये जो है भगवान ने जो मेरे को दिया है, ये मैं डिजर्व भी नहीं करता. मे बी 2nd of December 2018, I quit Mohan Bagan. I was with Mohan Bagan for 3 years, 2 months, and I was the longest serving coach. That day, when I lost the match against Chennai, people spitted me. They throw stones and all. I told that yes, when they wear my mask, 10,000 people wear my mask, then they can do all these things. यही है कलकत्ता का मजा. ये आपको सर को मैं चला देंगे. But I left Mohan Bagan, but those people really loved me like anything. और अभी कलकत्ता में आप बोलो 3 टीम बोलेंगे अभी. अब उसके बाद पहले भी ऐसे टीम थे जो ऑल इंडिया जाके खेलते थे. A little bit of a problem is these 3 teams take so much of the oxygen in the room. The other teams might never be up until that level. You know, climbing to that level is a struggle. चिराग यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब, एरियंस, किदरपुर, टॉलीगंज तो I-League भी खेला. मैं 83, 84, 85 में पेयरलेस का कोच था. मैं सब जगह ऑल ओवर इंडिया टीम को लेके गया था. तो अभी वो चीज़ कम हो गई. How many foreign players play in a team? 4. Now it's 4. From next year it will be 5. You will see number of goals scored by a foreigner is always much higher than a goal scored by an Indian player. True. Why? This is Kolkata club. Mohan Bagan is man. How many Bengali players are playing? It's been a shame because players have probably dwindled from Bengal if you think about it. In recent years, you won't see too many names from Bengal who are actually playing in the national team. अगाडि कलकत्ता में
4 तो लीग होता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ डिवीजन। लास्ट 3-4 years दिस इज नॉट कंटिन्यू, कंपटीशन नहीं होगा। हमारा कलकत्ता का आया था सीट 100 डेज के ऊपर, अभी तक हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। हमारा पहले, हमारा टाइम, हमारा बाद जितना प्लेयर इंडिया खेले थे 20 to 24 में इंडिया टीम खेल लिया। अभी बेबी लीग, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 15, अंडर 18, अंडर 19, अंडर 21, कितना अंडर होगा भाई? अंडर ही अंडर। If you see the team of India A2 Asian Games, out of 12-14 players, then more than 10 players is Bengali. You see goalkeeper Bhaskar, myself, Crampton, Sudeep Chatterjee, Alok Mukherjee, Prashant Banerjee, Prasun Banerjee, then Kartik Sheth, then left out Bidesh Bose. You see all players from Bengal, except Sabir Ali, but playing Bengal's club, but he is from Hyderabad. Look, the most convincing of crosses. Robbie Hasna is through, and Robbie Hasna books it in. 2025 has given hope that football talent in Bengal is resurging. The Santosh Trophy win under the inspiration leadership of Sanjoy Sen proves that these Maidans still breed champions. With the big three having tasted success in the recent years and competing at the top tier of Indian football once again, all roads in Indian football still lead to Kolkata. हम लोगों का जो भी क्लब्स है, मोहन बगान है, ये मोहम्मडन स्पोर्टिंग, ये सबका जो फुटबॉल स्कूल है, यहाँ से काफी बंगाली बच्चे उठ के आ रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आगे के दिन में जाके वो लोग इन तीनों क्लब में खेले और उसके बाद नेशनल टीम के लिए खेले। कोई भी क्लब में जाएंगे तो आपको एक चैंपियन होने का एक प्रेशर रहता है। मेरे को लगता है वो डेवलप करने के लिए एक अच्छा चीज़ है। Our idea is to promote Indian football. End of the day, even if we'll play ISL, our idea is to how we can harness more Indian boys rather than idea of winning the trophy. 3 teams from Bengal, from Kolkata will be playing, and when they will be playing their home match, will be extra mileage for ISL also. Defeat or loss is different thing, but we should participate. फिर से मैच का रिकैप देखना है। फिर से मैच का रिकैप। अरे तूने लाइव देखा भाई? लाइव देखा तो क्या बात, फिर से मजा लूटो। I'm very honest, being a Kolkata football lover, I'm just enjoying this. Mohammedan, East Bengal and Mohammedan. I still feel West Bengal is the best in football right now, still in India. यहाँ कलकत्ता सपोर्टर जो है, रियली दे आर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कलकत्ता में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको चैंपियन होना ही है। एक इस्ट बेंगल मोहनबागान যে ডার্বি হয় ওটা একটা আলাদা আবেগ রয়েছে আমাদের মধ্যে। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तीनों क्लब जो जब तक कोलकाता में रहेगा, फुटबॉल का जो क्रेज देख रहे हैं वो तब तक रहेगा। फुटबॉल का मौका तो कोलकाता ही है ना। फैंस का सपोर्ट आधा, प्लेयर खेला आधा। Ever in my life I would have thought कि आई लीग मैच के लिए ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार लोग देखने आएंगे, बट इट्स हैपनिंग। इनके रिसीव करते ईस्ट बंगाल डॉक्यूमेंट्री कर रहा है, ऐसे डॉक्यूमेंट्री करो इंडियन फुटबॉल फ्रेटर्निटी जागो। उनका एक ही सपना था अंटिल ही प्लेड फुटबॉल, अंटिल फैमिली प्रॉब्लम केम, कि उनका सपना था वो मोहन बगान से खेलेंगे। सर हैदराबाद की बिरयानी ज़्यादा बेटर है कि कोलकाता की बिरयानी ज़्यादा बेटर है? आप देखो यार, ये भी गाना पड़ेगा क्या? अभी ना